अस्सलाम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है फीमेल एथलीट ट्राइएड। नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइएड मीन्स इसमें 3 चीज़ें होंगी। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, जो कि डिसऑर्डर ईटिंग की वजह से हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या फिर नॉट ईटिंग इनफ। सेकेंड जो कंडीशन इसमें डेवलप होती है, लो बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपेनिया भी हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी जो हमारी लेटर स्टेजेस में होंगी। मेनेस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स होंगे या फिर एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेनेस्ट्रेशन होगा। 65% of the female high school non-athlete meet criteria for female athlete triad. 78% of female high school athletes meet criteria for female athlete triad. Quote of the day: kindness is a mark of faith, and whoever is not kind has no faith. फीमेल एथलीट ट्राइएड, उसकी मैनेजमेंट देखेंगे और उनके प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स कौन से हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाता है। फीमेल एथलीट ट्राइएड में हमें जेंडर इनइक्वलिटी मिलती है। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब फीमेल वैसे नाम में ही आ गया है, तो ये फीमेल्स में कंडीशन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट। सोशल इन्वायरमेंट इनहिबिट्स वोमेन फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। नाउ मोर वोमेन एथलीट्स आर इमर्जिंग एज रोल मॉडल्स। रीजन्स फॉर पार्टिसिपेशन, रीजन्स फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन स्पोर्ट्स। क्या रीजन्स हैं कि वोमेन जो है वो स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं? लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेकेंड, ट्रेडिशनल आउटलुक एंड व्यूज़, मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, लैक ऑफ फीमेल एथलीट पर्सन एज रोल मॉडल, लैक ऑफ फीमेल कोचेस, लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। Special problems faced by women athletes. First condition, first problem is menarche. What is menarche? It is the first menstrual period of a girl that generally happens at the age of 12 to 14 years. Intensive sports activity may lead to health risk to young girls, and it is reflected as an abnormal menarche. Second problem is menstrual dysfunction. It is disorder or irregularities in menstrual cycle. The disorder include absence of menstrual period, abdominal cramps, heavy or prolonged periods, irregular periods, delayed in first menstrual period. पीरियड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं फीमेल्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूड स्विंग्स होते हैं। सेकंड, ब्रेस्ट पेन है। थर्ड पे हम देख सकते हैं लो बैक पेन। फोर्थ पिक्चर में एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट हेडेक हो सकता है। इसके बाद एक्नी होती है फेस पे। और लास्ट पे क्या है हमारे पास? इंक्रीजिंग एपिटाइट। Pregnancy can impact female athlete both physically and emotionally. It is seen as break in sports career of a woman. It is not recommended to take part in intensive sports activities during pregnancy. Guidelines for the pregnant athlete. Physical exercise guidelines for pregnant women. Rehabilitation management and treatment. Coordination of care, patient and family education. Next problem is menopause. Menopause is the natural end of the female's menstrual cycle. The depletion of sex hormone estrogen initiates the process. Low estrogen level may leave a woman feeling less capable of working out, but training still helps with weight bearing management. Heavier resistance and power level training can aid in improving body composition, bone turnover, and overall strength in menopausal women. Management of menopause. General guidelines recommended at least 2 strength training sessions per week for adults. However, to combat the menopausal effect and enhance athletic ability, 4 to 6 times per week would elicit more benefits. Therefore, recommendations suggested 4 to 6 sets of 8 to 12 repetitions when choosing the body weight. Female athlete triad. It is the health concern for active women and girls who are driving to excel in sports. It involves 3 distinct and interrelated conditions. One, फर्स्ट जो है एनीमिया, सेकंड एमिनोरिया एंड थर्ड क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो एनीमिया है, एनीमिया अकर्स ड्यू टू ईटिंग डिसऑर्डर। फीमेल एथलीट ट्राइएड वही एनर्जी डेफिसिट, लो बोन मास, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। एनीमिया को देखेंगे, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया. Female athlete often face anemia due to iron deficiency. Regular menstrual losses increase the iron need of female athlete. They need to take extra care to fulfill additional iron requirement of the body by taking iron-rich food.
हम इस पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एनीमिक लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स. Next, management of anemia, dietary modification and supplements for better iron intake. Eat a balanced diet that includes rich iron such as red meat. Iron fortified products should be consumed to maintain iron level in body and get rid of anemic symptoms. Next problem is osteoporosis. Osteo means bones, porosis means porous. Osteoporosis is a condition that affects nearly 10% of the global female population and is especially common among the female athlete. This disease is distinguished by a decrease in bone mass and density as well as enlargement of the bone spaces which result in porosity and fragility. Management of osteoporosis: increase in amount of vitamin D, calcium, protein, and fluids is usually necessary. Weight bearing, moderate impact activities, and strength training to prevent bone losses. Bisphosphonates are usually the first choice for osteoporosis treatment. साथ पिक्चर में हम देख सकते हैं एक साइड पे हमारे पास नॉर्मल हेल्दी बोन है और सेकंड साइड पे ऑस्टियोपोरोटिक बोन है. Next problem is amenorrhea. It is absence of menstruation for 3 months or the more. Primary amenorrhea, delayed beginning of the menstrual cycle. जैसे मेनार्की हमने पढ़ा था, अगर मेनार्की डिले हो जाए तो वो प्राइमरी एमिनोरिया है. सेकेंडरी एमिनोरिया, स्टॉपिंग ऑफ रेगुलर menstrual cycle for 3 months or the more. Various factors influencing the amenorrhea: hormonal changes, intensive exercises, intake of less calories. Next is management of amenorrhea. Normalize energy status primarily through the modification of diet and exercise training. Restoration or normalization of body weight. Add nutrients to the diet to meet the essential needs of the body. Choose healthy source of protein. Amenorrhea, absence of a woman's period. Symptoms of female athlete triad: fatigue, weight loss, bone loss, no periods or irregular periods, stress fracture or other broken bones, aggressions, depression. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड में एक्सेसिव वेट लॉस है, डिप्रेशन है और डिजीनेस है. प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फीमेल एथलीट इश्यूज. फर्स्ट, प्रेशर to achieve unrealistically low body weight should be avoided by the parents and coaches. Out of competition, weigh-in should be encouraged. Rules governing sports should be examined, and rules encouraging excessive leanness should be revised. Athletes and coaches should be encouraged to look for warning signs of eating disorders. Psychological signs should be examined, which include complaining of feeling of fat despite being thin, anxiety or depression, difficulty concentrating, preoccupation with weight and eating. Examination of physical signs and symptoms is necessary, which includes significant weight loss, frequent complaint of dehydration, muscle cramps, weakness, and fatigue. Address the all issues. Female athlete triad summary: certain sports have higher incidence of problems. Early intervention, treatment with medical team approach, comprehensive evaluation with close monitoring, education and prevention. Any question? If you have any question, free to ask in comment box. Thank you so much. नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.